हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। ये मेरे पास फ़ोन Redmi 9A आया हुआ है। ये फ़ोन डेड कंडीशन में है। इसे चार्जिंग पे लगा रहा हूँ तो डायरेक्ट 1.62 चार्जिंग कंज्यूम कर रहा है। कस्टमर का कहना है कि चलते चलते डेड हो गया है। इसमें जो प्रॉब्लम है वो मेरे को पता है, मैंने डायग्नोस कर लिया है। इसमें जो सीपीयू के पास में एक रजिस्टर लगा है वो शॉर्ट दिखा रहा है। उसकी लाइन सीधी सीपीयू से पावर आईसी में जाती है। अभी तो बॉर्नी स्कीमेटिक ऑन करके आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए। ये सीपीयू के नीचे ये दो कैपेसिटर लगे हुए हैं ना, इसमें से जो सेकंड नंबर का कैपेसिटर है ना वो शॉर्ट दिखा रहा है। उसकी लाइन जो है ना वो डायरेक्ट पावर आईसी में जा रही है। ये देखिए, ये लाइन पावर आईसी से निकल के सीपीयू में जा रही है। अब हमें करना क्या है कि अब मैं इसकी पावर आईसी निकालूंगा, और पावर आईसी निकालने के बाद जो यहाँ पे लाइन जा रही है उस पर यूवी ग्लू लगा के आईसी फिर से रिवॉल्व करके लगा देंगे, फोन ऑन हो जाएगा। अगर गाइस आपको कोई भी फ़ोन रिपेयर कराना है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, या कोई फ़ोन में प्रॉब्लम आ रही है, कोई भी फ़ोन के रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज या कॉल व्हाट्सएप करके मुझसे पूछ सकते हैं। इसके लिए मैं अपना नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। गाइस अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।